start with chapter number 7, that is Introduction to Scratch 3.0. Right? Now children, let's study about Scratch. Your mother gave you instruction to prepare a laminate, right? In same way, you have given instruction to the computer to do a task. The set of instruction that your mother gave you are together called program. So word gives you commands to the computer to change the font or font color. ठीक है, आप उसे bold, italic जैसे चाहें. We give commands to the form of blocks to create interesting animation and game. जो Scratch सॉफ्टवेयर किसने डेवलप करा है? MIT, Manchester Institute of Technology. It is developed to teach the concept of programming to young learners. It is used for creating animation, games, quiz, stories. Many versions of Scratch program have been released, and we have Scratch 1.0, 1.3 to 20.0. और लेटेस्ट वर्जन है 3.0. इट इज़ डाउनलोडेड एंड रन ईजिली ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडो हो गया, मैक हो गया और लाइनक्स हो गया. व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्क्रैच? इन स्क्रैच देयर आर मेनी कलरफुल ऑब्जेक्ट टू टेक फन एंड ईजी प्रोग्राम. द ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच हेल्प्स यू टू ईजिली मेक एनिमेशन, गेम्स, क्विजेज एंड स्टोरीज. ठीक है, आप एनिमेशंस बनाते हो, क्विजेज बनाते हो, एंड यू कैन क्रिएट ऑन योर ओन स्क्रैच प्रोजेक्ट. यू कैन इवन शेयर योर प्रोजेक्ट ऑनलाइन. It's let you to see project to create by others. You can even make changes. आप projects में changes चाहें तो changes भी कर सकते हैं. Starting Scratch. Click on the start button, scroll down, and the Scratch desktop and open. The window will appear like this. Your Scratch window will appear. Now these are the different components. ये क्या है? आपकी title bar. These are tabs. ये आपके blocks menu है. Right? यहाँ पे आपको different blocks दिए हुए हैं. You can see over here. This is go and stop button. This is menu bar. This is stage area. ठीक है, ये आपका स्प्राइट है और ये स्प्राइट एरिया और है द स्प्राइट इन्फो पेन. जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो आपको यहाँ दिखेगा. फर्स्ट इज टाइटल बार. राइट, सो वी कैन सी इट इज द टॉप मोस्ट बार. ये टॉप मोस्ट बार है. इट शोज द नेम ऑफ द प्रोग्राम. ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार देयर आर 3 कंट्रोल बटन: मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज. मेन्यू बार हैव सेवरल मेन्यू ऑप्शन सच एज ग्लोब, फाइल, एडिट, स्क्रैच प्रोजेक्ट. जो कमांड होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स इन स्क्रैच. द ग्लोब कमांड इज यूज्ड इन द स्क्रैच वैल्यू लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज. द फाइल मेन्यू हैज वेरियस ऑप्शन टू क्रिएट. राइट, ओपन एंड सेव. नाउ द एडिट मेन्यू हैज ऑप्शन टू अनडू और डिलीट स्प्राइट कमांड. क्लिकिंग ऑन द ट्यूटोरियल्स ओपन द स्क्रैच ट्यूटोरियल. आपको ओपन करना है. राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज स्क्रैच. यहाँ पे फाइल ऑप्शन, दिस इज एडिट ऑप्शन, दिस इज ट्यूटोरियल एंड दिस इज नेम ऑफ करेंट प्रोजेक्ट. और ये आपका ग्लोब. व्हाट इज स्टेज एरिया? एरिया ब्लैंक एरिया जहाँ पे आप क्या करते हो? स्प्राइट को मूव करते हो और इंटरेक्ट करते हो विद अदर स्प्राइट. राइट, इनफैक्ट एनी मूवमेंट स्क्रैच हैपन इन दिस एरिया. हेयर यू कैन वॉच स्टोरीज, प्ले गेम्स एंड रन स्क्रैच प्रोजेक्ट्स. राइट, द स्प्राइट इन्फो पेन आर एरिया इज जस्ट बिलो द स्प्राइट. वो आपको बिल्कुल स्प्राइट के नीचे देखने को. What is sprite? It is an object or a character that appears on the screen. The default sprite is a cat, but there are many other sprites to choose from. In Scratch, जो sprite है, it's an object that carries out the task. जो आपका कहाँ रिटर्न होता है Scratch प्रोग्राम में. It can move, turn, jump, increase or decrease in size. Right? Go button, clicking on green flag. Stop button, clicking on red stop button, running the program. Next is sprite info pane, which is divided into 2 panes: sprite pane and backdrop pane. It shows all the details of sprite and backdrop used in the project. Then when we have sprite pane contains a thumbnail view of all the sprite in a project. You can add, delete, see the name and location. You can increase and decrease the size of sprite. Right? Now a new sprite can be added by clicking any one of the following button. Choose a sprite button, open choose a sprite. Paint brush button, surprise button and upload button. देखो पेंट ब्रश से आप क्या कर सकते हो? You can design a new sprite, and with surprise button you can add the sprite tag. Upload sprite में आप create कर सकते हो कोई भी sprite जो आप create कर रहे हो and to Scratch line. Then we have backdrop pane. So the right pane of the sprite pane क्या होता है? आपका backdrop pane होता है. You can change it. Choose a backdrop button, open a choose a backdrop window. Paint brush button आपको डिजाइन करने के लिए. surprise button, upload button, upload button. Right? Then we have tabs. We have 3 tabs: close tab, code tab, costume tab and sound tab. Then we have code tab. It is also known as block placer. यहाँ पे आपके कई ब्लॉक्स होते हैं जो आपको यूज कर जाते हैं प्रोग्रामिंग का स्प्राइट. एक ये क्या क्रिएट करते हैं? स्क्रिप्ट्स इन द स्क्रैच. ये ब्लॉक करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क. ये फिट विद ईच अदर. राइट, एंड देयर आर 9 ब्लॉक कैटेगरी. कौन कौन सी है?
मोशन, लुक, साउंड, इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल एंड माइक्रो। हर एक ब्लॉक होता है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. बाय डिफॉल्ट इफ वी टॉक अबाउट मोशन ब्लॉक इज सिलेक्टेड व्हेन द स्केच डेस्कटॉप opens. Right? The code contains the add extension button. You can add a new block category using this button. आप न्यू कैटेगरी को यहाँ से ऐड कर सकते हो. देन वी हैव कॉस्ट्यूम टैब, यू कैन क्रिएट, और आप चेंजेस भी कर सकते हो स्ट्राइप में और उसके बैकड्रॉप कॉस्ट्यूम. राइट नाउ साउंड टैब, यू कैन क्रिएट एंड मेक अ चेंजेस टू द साउंड इन योर स्क्रिप्ट यूजिंग साउंड टैब. और आप जो चेंज है बिटवीन द स्प्राइट और जो बैकड्रॉप है, आप उसको भी अगर आप चेंज करना चाहें ड्रैग ड्रॉप एरिया से चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट कोडिंग एरिया. द कोडिंग एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पे ब्लॉक्स को प्लेस करा जाता है और हम क्या क्रिएट करते हैं, स्क्राइप्स. द ब्लॉक्स आर स्टैक्ड ऑन टू वन टॉप और अदर टू क्रिएट द स्क्राइप. इफ यू सेव अ प्रोजेक्ट विद अ स्क्राइप, जो स्क्राइप है वो अकर करेगी व्हेन यू ओपन द प्रोजेक्ट अगेन, जब आप दोबारा से प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे. नाउ स्क्रिप्ट इट इज अ सेट ऑफ ब्लॉक्स जो क्या होता है, इंटरलॉक्ड होता है. गिव स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग. कैन बी डिवाइड एज अ प्रोग्राम इन विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक. इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किस फॉर्म में, ब्लॉक्स के फॉर्म. यू कैन यूज अ मैग्नीफाइंग बटन एट द बॉटम ऑफ द कोडिंग एरिया टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. इससे आप क्या कर सकते हो, साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो. जूम आउट, जूम इन. जूम आउट डिक्रीज करेगा, जूम इन इंक्रीज करेगा. ओरिजिनल बटन जो आपको ओरिजिनल साइज है वो दिखाएगा. राइट नाउ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट. नाउ यू हैव टू क्लिक द फाइल. आप फाइल पे जाएंगे. A drop-down list appears. Select a new form list. If you have not saved the current project, a dialog box opens. What? With the message replace content of the current project. A new project will open. आपका नया project open होगा. If you click cancel, a dialog box closes and your project appears. Now saving a project. Click a file. A drop-down list appear. Select save to your project computer. The save as dialog box open. Open the location where you want to save the project. आपको लोकेशन को ओपन करना है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं. Type a name such as my scratch project in the file name. Click save. The name is displayed in the menu bar. आप देखेंगे ऐसे मेन्यू बार में आपका नेम डिस्प्ले हो जाएगा and you can save. Moving and turning sprite. Moving means let us learn how to move the default sprite, right? And to move a sprite, do the following. आपको क्या करना है? First is drag the move block. आप कोडिंग एरिया में जाकर मूव ब्लॉक को ड्रैग करेंगे. क्लिक द ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया. यू विल ऑब्जर्व द कैट मूव्स फॉरवर्ड एवरी टाइम टू क्लिक द ब्लॉक. तो कैट है वो मूव करती है फॉरवर्ड. चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स. यू कैन ऑल्सो चेंज नंबर ऑफ स्टेप बाय विच अ स्प्राइट मूव. क्लिक ऑन द नंबर 10 इन द मूव ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया एंड द नंबर गेट हाईलाइटेड. टाइप नंबर से 20. टू मेक अ स्प्राइट मूव बैकवर्ड यू हैव टू टाइप अ नेगेटिव नंबर से 30. द वैल्यूज कैन बी चेंज इन द sum of the blocks. Now turning a sprite. You can make the sprite turn at the same location, right? The block with the arrow turn the sprite clockwise and arrows turn the sprite anti-clockwise. ये आपका clockwise turn करेगा और ये आपका anti-clockwise. Now let's stack these blocks together and create a sprite. Drag the move block. Change the number of step to 100. Now drag the turn block and drag the anti-clockwise turn block to the sprite. Now drag the move block. आप drag करोगे. Change the number of step to 200. Click on the move block to make the sprite move forward. Turn clockwise, turn anti-clockwise and then move backward. आपको backward की तरफ भी move करना पड़ेगा. और आप events पे भी click कर सकते हैं. Click and drag block and place it above the move block. Click on the go button. The sprite first move forward by 100 steps and then move backward by 200 steps. Right? Then you can save the project. जैसे आप सेव करोगे प्रोजेक्ट को, you can see it like. Now open an existing project. You can see. Click on the file. A drop-down list appears. Select load from your computer from the list. Open dialog box appears. Browse to the location of your project. Select the name. Click open button to open the project. आप open button पे click करोगे जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो. Now existing scratch. So to exit scratch, click on close button in the title bar. All project must be saved before you exit. ठीक है, जितने प्रोजेक्ट है आप खत्म करने से पहले वो सारे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे. राइट, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर ऑफ स्क्रैच. होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. नाउ व्हिच ऑफ these cannot be creating using scratch? What we cannot create, that is, to which block category does this block belongs to? Motion.
The area in the scratch of the desktop show the result, that is stage. You make changes in the stripe and background, that is costume. Next is fill in the blanks. Dash is the background used in the scratch project, that is stage. क्लिक ऑन द डैश ब्लॉक. आप कौन से ब्लॉक पे? टर्न ब्लॉक पे. अगर आपको क्या करना है? स्प्राइट को टर्न करना. राइट. नेक्स्ट इज डैश बटन इज यूज्ड फॉर एडिंग ब्लॉक्स कैटेगरी. एड एक्सटेंशन. नाउ द कोड टैब इज ऑल्सो रोल एंड जो आपका कोड टैब है उसका हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट. एरिया. द ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इन द डैश एरिया टू क्रिएट स्क्रिप्ट. कौन से एरिया में रखा जाता है? कोडिंग एरिया. वी kept in a coding area. Now you cannot create new sprite and backdrop in Scratch. False. You can create. You cannot create your own Scratch project. False. आप कर सकते हैं create. The object in Scratch helps you to easily make animation. It's true. The edit option opens the Scratch tutorials. False. We cannot make the scribe turn as the same location. False. Now this you have to define the following stage and your sprite, script and coding. Now answer the following. Write down the 3 things you can do. जो भी आप करते हो, गेम्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. List the component, different component, file, script, area. ठीक है. Explain the block in Scratch. Use क्या है motion block का, and you have to define the title. Right? This is all about in this chapter. Hope you understood. Let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.